are an embodiment of wisdom, virtues, love, and the essence of everything. You are certainly the life force of our bodies. We bow down to Mother India. Sri Gurubhyo Namaha. With the divine blessings of our mentor Guru, Dr. Mrs. YGP, we have gathered here to celebrate the 74th Independence Day of India virtually. On behalf of the PSBB Millennium School OMR, I warmly welcome the chief guest, our beloved principal, most valued parents, my dear teachers and students. It's a great honor for me to introduce our chief guest, Lieutenant Colonel Balinder Singh. He has served as a helicopter pilot in Army Aviation with 2000 hours of flying experience. He underwent training at NDA and IMA and has been serving in the Army for the past 26 years, and he had also taken up an assignment with the United Nations Peacekeeping Force in Congo, Africa. Lieutenant Colonel Balinder Singh has a master's degree from aviation law and air transport management from NALSA, Hyderabad. He also has a diploma in aviation captain career course from the USA. Once again, a hearty welcome to you, Colonel. At this juncture, I would like to take this opportunity to salute the valiant personnel of our armed and paramilitary forces who have sacrificed so much for our country and have always stood to safeguard the territorial integrity and the honor of our motherland. I once again welcome you all with great pleasure, and I hope you enjoy this event with great patriotic fervor. We should have one desire today, to be brave so that India would live in social harmony forever. Jai Hind. நீராறும் கடலொடுக்க நிலமடர்ந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போலனை துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பி என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Audio Jungle. झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा मातृभूमि का तन मन सारा झंडा
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय। बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। Audio Jungle. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். யார் வாங்கி தந்தது இந்த சுதந்திரம்? ஆம், நம் நாட்டுக்கு யார் வாங்கி தந்தது இந்த சுதந்திரம்? அடிமை பாரதத்தில் ஒரு கையில் வாளும் மறு கையில் குழந்தையும் வைத்துக் கொண்டு ஆங்கிலேயரை போரில் விரட்டி அடித்தாலே வீரமங்கை ஜான்சி ராணி, அவர்களை பற்றி சொல்லவா? தூக்கு மேடையில் நின்று ஆங்கிலேயரின் ஆணவத்தை அடக்க இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று ஒரு தீப்பொறி வார்த்தையால் பாரதம் முழுவதும் சுதந்திர வேள்வியை வளர்த்தாரே பகத்சிங், அவரை பற்றி சொல்லவா? அடித்தார், ஆங்கிலேயர் அவரை அடித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஆனாலும் அவர் கையில் இருந்த பாரத மணிக்கொடி தரையில் விழாமல் காத்து வந்தே மாதரம் என்று முழங்கினாரே திருப்பூர் குமரன், அவரை பற்றி சொல்லவா? கத்தி ரத்தம் இவை எதுவும் இல்லாமல் மாற்று சிந்தனையோடு அஹிம்சையை கையில் எடுத்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஆங்கிலேயரை துரத்தி அடித்தாரே, அவரை பற்றி சொல்லவா? இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி சொல்ல ஒரு நிமிடம் போதாது, ஏன் ஒரு வருடம் போதாது. இவர்கள் வாங்கி தந்த சுதந்திரத்தை நாம் காத்து இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்றுவோம். ஜெய்ஹிந்த். Audio Jungle. தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்து உணர்ந்திடு சூழ்களை வாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய். தமிழ் தாயே, உனக்கென் முதல் வணக்கம். ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என்று காண்போம் களிப்போம் என்று காத்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் 74வது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று கொண்டாடும் இத்தருணத்தில் 73 ஆண்டுகளாக சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கும் நாம் சாதித்ததென்ன, திறம்பட இன்னும் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். அணுவை துளைத்து 7 கடலை புகட்டி குருகத்தரித்த குரல் படைத்த மண் அல்லவா நம் பாரத மண். அணு ஆராய்ச்சி தொடங்கி அண்டவெளி ஆராய்ச்சி வரை நாம் வெற்றி பெற்று வருகிறோம். செயற்கை கோள்கள் ஏவி உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த நாம் இனி இயற்கை விவசாயத்தையும் உலகிற்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். கண்ணுக்கு புலப்படாத நச்சு கிருமி ஒன்று கண்டங்கள் கடல்கள் கடந்து மனித குலத்தை முடக்கி வைத்திருக்கும் நிலையில் உலகே இன்று நம் பண்டைய உணவு முறையையும் யோக பயிற்சி முறையையும் உற்று நோக்கி வியந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே சுதந்திர பறவைகளாக முன்னேற்ற பாதையில் சிறகடிக்கும் நாம் சீரிய நம் பண்பாட்டையும் பழக்க வழக்கங்களையும் என்றும் நம் வாழ்வின் அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் கூற்றின்படி அன்பால் வையத்தில் புதுமையை புகுத்தி வையத்து மக்கள் எல்லாம் பயனுற வாழ்வதற்கு வல்லமை வேண்டி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Audio Jungle. Shri Gurubhyo Namaha. Feeling proud to deliver my speech on the 73rd Independence Day of India, it is a great honor for me to be here. Before I get on to my speech, I would like to wish every fellow Indian a very happy Independence Day. Now, we are living at a point of time where our patriotism is more important than reliving the past. So, let me gradually take you through to where our patriotism stands. Firstly, we the citizens of this great country have to realize that there are no freedom fighters living with us who will tell their tales, share their experience and keep the patriotism alive in our hearts. We are on our own and we need to realize what we are up to.
We are proud of Mr. Sundar Pichai, the CEO of Google, Mr. Satya Nadella, the CEO of Microsoft, Mr. Ashok Vemuri, the CEO of Xerox. This list literally goes on. But we are failing to realize that we are losing all our intelligent minds to the rest of the world. See, India is not a factory to just create intelligent brains and donate it to the world. I mean, aren't we proud to have an NRI in every other home? I agree, we dream big dreams, we want to chase those dreams, but we need to realize that throughout we are dreaming to leave our mother nation, India. See, we don't choose our mother nation, it is our destiny to be born as Indians on a country of such rich culture and that which maintains unity in spite of all possible diversities. India is the only country that helped 150 other countries in this pandemic situation. Neither the super powerful US or Russia has done this. Even the UN chief Antonio Guterres has saluted India for this contribution. We need to be proud of Dharavi not because it is the largest slum of Asia, but because it is proof that the COVID outbreak can be controlled even in a place where social distancing is practically impossible. Yes, like any other country, India has its flaws. It is corrupt, it is not clean, but what are we doing to change this? Aren't we the same people who slingshot the garbage bags out of our bikes and cars? You might be tired of listening to be the change you want to see. But let's question ourselves. Are we? So I want to make use of this opportunity on the 73rd Independence Day of India to awaken all those lost spirits of patriotism inside all of us. And I hope truly and sincerely that on our next Independence Day, when someone else is going to take the stage, about our nation, it will be about our patriotism. So let's stop dreaming about leaving India, but instead stay and make it a better nation than ever. Be a proud Indian. Jai Hind. Audio Jungle. Audio Jungle. नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा मैं डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, देने भाई दम। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, जय भाई दम। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम,
वरना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Audio Jungle. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धंधे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम बढ़ते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ओ थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बहारी सी मस्त भवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनून वो बंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह तू रंग दे बसंती, यारा मोह तू रंग दे बसंती। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक पा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। है वतन मैं वतन। Audio Jungle. Shri Gurubhyo Namaha. How I will serve my country. The first thought that occurs while talking about serving a country is by enrolling in the army, navy or air force. I say serving the country also means working in our country for the people of our country. I want to pursue my dream of becoming an archaeologist and bring out the old glory of India. I'm not saying all has to bring out the old glory of India. Even an honest,
tax-paying citizen also serves their country by contributing to the economic development. I would like to conclude by saying every drop of water makes an ocean. If we all join together and work for the nation, we can build a great India. Jai Hind. Audio Jungle. For having taken the pain of visiting our school and hoisting the national flag and making us feel proud. I also would like to thank the parents and the participating students and the staff members who have assembled here to make the flag hoisting possible at our school campus in spite of this pandemic situation. Thank you one and all. Now, as a small token of love and appreciation, I would like to felicitate our chief guest. Thank you, sir. May I humbly request our chief guest to deliver his Independence Day message. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, children. 15th August is a historic day for India. It is our Independence Day. This being the 74th Independence Day celebration. You and me are very privileged to have been born in a free country. You can imagine what things would have been for people when they were living in India when it was under the British rule. Just imagine in the last 6 months since March, when the pandemic struck and we have been restricted to move around, restricted to do things, how bad we are feeling. And imagine what would have been the state of the country, of the people before 1947, when they had restriction everywhere to move to one place, to do what they want, to live life how they wanted. So it is the responsibility of each one of us to be good citizens of this country, to give back to this country. We always have a thing that, what is the country doing for me? What is my community doing for me? What is my school doing for me? Children, when you have this thing in your mind, just remember and ask yourself, what are you doing for your country, for your community, for your school? You will get an answer that then and there. The Independence Day was a very special mention for me. My grandfather was part of the Indian independence struggle. He was in INA. He used to tell stories about what things were, and he used to compare them with the stories now, and he would say, wow, what a change we are seeing. So children, this is our time that we should give back to the society. And giving back to society does not be just by one thing, like I am in the army. So if you are seeing this message from me, it is not that army or joining the defense forces is the only thing to give back to your country. Giving back to your country is by anything and everything that you do good. From being doctors, to
to joining the police force, to being firefighters, to being good businessmen with good values, anything which brings up the country is what is required at this juncture. As school students, you are expected to have certain values. There are instances when in a class or in the school, there are certain students who try to bully people. That is entirely wrong and unacceptable. We are a country because we are united by a force, and unity means being together, helping each other out. Remember, today you might be strong, but tomorrow you might be on the receiving side. Try to be a good human being, good students. Try to excel. If you want to show your power, show it in studies, show it in sports, show it in extracurricular activities. That is more important. I am commanding the NCC unit, and you have your NCC presence in the school. I would want all these children, all those who feel that, we are strong, please come and join NCC. I want the girls especially join NCC. The NCC motto says unity and discipline, 2 words. And these 2 words are important in your life. Unity means unity with each other, with other communities, with people from other society, people who are not as privileged as you. And discipline, which a lot of people feel is coming to one place at the correct time, and they fear discipline. No, by discipline we mean self-discipline. Self-discipline when people are not watching you. I want maximum participation in NCC activities, and don't feel that NCC is only for joining the armed forces. NCC is for if you want to be a doctor, if you want to be a businessman, if you want to be a policeman, if you want to do anything, you want to be an IAS officer, you want to be a politician, anything. It will NCC will always help you. I would want each one of you today to remember the sacrifices made by our freedom fighters. That is why we are all sitting here, we are chatting to each other, we are learning, and they have ensured that our country is able to match and become the #1 country in the world in the times to come. Again, from my side, I want to wish Principal Ma'am
all the students, the staff, and the parents on our Independence Day. I thank you for taking the time out to listen to whatever I had to say. Please imbibe good manners, good spirits, good things from your teachers, from your parents, and be good citizens of this country. Thank you very much. Audio Jungle. I, on behalf of our school, would like to thank the chief guest, principal, parents, students, and my colleagues. I am privileged to thank our honorable chief guest, Lieutenant Colonel Balinder Singh, for his gracious presence and valuable insights. Thank you, Colonel. We are grateful to our respected principal for making this event possible. We thank all the participants and their parents for their contribution and cooperation. We extend our gratitude to the teachers and the admin staff who worked dedicatedly in compiling and putting this event together. Thank you all for being with us and for witnessing this event virtually. Social distancing will not deter the spirit of patriotism. We hope it will remain a treasure which will keep the memory of this Independence Day alive. Thank you. Vande Mataram.